Good morning, students. So, today we'll be talking about understanding harmony in existence and the process for self exploration or self verification. ये भी हम already कर चुके हैं. See, so if I ask you a question कि जैसे आजकल आप लोगों का अधिकतर टाइम लैपटॉप पर आजकल के स्टूडेंट्स का या मोबाइल वगैरह पर ही रहता है. सो इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज बिटवीन यू और द मोबाइल और लैपटॉप ऑन विच यू आर वर्किंग, तो probably your answer would be nothing. या इफ आई आस्क यू व्हाट इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, आपका आंसर फिर यही रहेगा नथिंग. या सम ऑफ यू में से एम्प्टी स्पेस या स्पेस. So, if I ask you where is the earth, yeah, where is the sun, again what is the answer? The answer is space. So yes, we all are talking about space. We normally don't pay attention to this reality because ये एक unit नहीं है. You can't touch it, you can't smell it, it is intangible in nature. We normally just see through it. बट द फैक्ट इज कि क्योंकि आप इस चीज़ को देख नहीं सकते, आप इसे टच नहीं कर सकते, जैसे कि आप अदर यूनिट्स को, किसी बुक को, किसी सोफ़ा को, अपने फ्रेंड को देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर. Space does not exist just between the earth and sun, it is all around you. It is between you and it is between the laptop or the mobile which you might be holding right now. It is inside you, it is around you. तो जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा अटेंशन इस पर देने लगते हैं तो वी कैन सी दैट व्हाट वी कॉल अ स्पेस या एम्प्टीनेस इज एक्चुअली एवरीवेयर. इसके बारे में हम रियली बॉदर कई बार नहीं करते हैं एक्सेप्ट क्योंकि एक एकेडमिक साइंस में सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में, बट बिकॉज स्पेस इट सीम्स कि डज नॉट प्ले एनी रोल इन आवर डेली लाइफ. सो अब यहाँ पर है कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट हेयर देन. तो एक्चुअली व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड ऑल लेवल्स ऑफ आवर लिविंग एंड जब इसे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इट टर्न्स आउट दैट व्हाट वी कॉल एज एग्जिस्टेंस या ऑल दैट एग्जिस्ट, it includes space as well. So we may think that space has no role in our life, but इसको थोड़ा ascertain कर सकते हैं. So we can say कि existence is equal to space plus units which are in space. तो okay, so each unit of every order, चाहे वो material हो, plant order हो, pranic order या animal and human order, they exist in space or they are in space. So we can also say that they are submerged in space. So let's explore this. यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि existence क्या है? It is coexistence और it is units, चाहे वो किसी भी order की units हो, which are submerged in space. And we'll explore this further. इसी तरीके से यूनिट्स में एक्टिविटी है, माने वो क्रियाशील है, वाइल स्पेस में एक्टिविटी नहीं है. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ईच यूनिट इज समथिंग दैट इज डायनेमिक एंड एक्टिव. चाहे वो एक्टिविटी फिर एक फिजिकल एक्टिविटी हो, फिजिको केमिकल एक्टिविटी हो. हमने जब हार्मनी इन नेचर लास्ट यूनिट में पढ़ा था, देन वी हैड सेड that understood that every order is characterized by some form of activity. जैसे अगर हमने बात की थी कि एक स्टेशनरी चेयर विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, तो वुड अगर उसे 20 साल के लिए, 70 साल के लिए भी रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिर भी वुड में कॉम्पोजिशन डीकॉम्पोजिशन हो रहा है. इसी तरीके से थिंकिंग इज़ एन एक्टिविटी, डिज़ायरिंग इज़ एन एक्टिविटी, टेस्टिंग सिलेक्शन इज़ एन एक्टिविटी. ऑन दी अदर हैंड स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं है एंड ओनली यूनिट्स आर एक्टिव. Or we can say that when something is active or has activity, we call it as a unit. Space में there might be particles of gases and dust in between. These particles are active, but space per se is not having any activity. So इसी तरीके से एक और point लिखा है, energized. So we see that units are energized in space, while space is energy in equilibrium. So see, what we normally call or consider as energy is actually the transfer of energy. For example, अगर एक पानी के बर्तन को, पानी के पतीले को अगर आप गैस पर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है. What is actually happening is heat energy from the flame was transferred to the water in the vessel. But what about the water before we put it on the flame? Was it energized? Or what about the gas before we lit it? Was it energized?
तो हमें नॉर्मली हम कह सकते हैं कि नो नो इट वाज नॉट, बट द फैक्ट इज कि एनर्जी उसमें पहले से भी थी, बिकॉज एनीथिंग दैट इज अ यूनिट हैज एक्टिविटी एंड एनीथिंग दैट इज एक्टिविटी इज energized. So all the particles in water, yeah, gas may, they were very active, they were very energized. We can't see this easily. We don't see the, as we don't see the physical effects of the unheated water, yeah, the unlit gas, but they are still energized. But space, on the other hand, is not a unit and it has no activity. So space is actually energy in equilibrium. Yeah, it is, you may say it is constant energy, and this energy is available to all the units. So far we have understood that units are limited in size while space is unlimited. Units are having activity, or they are active, while space has no activity. Units are energized in space while space is energy in equilibrium. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. सो यू सी, every unit is self organized. Every unit is an organization, and it recognizes other units and it combines to form a bigger organization. Say for example, subatomic particles जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो मिलके बन जाते हैं एटम्स. एटम मिलके फिर बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स. इसी तरीके से बॉडी की बेसिक यूनिट एक सेल है. तो ये सेल्स आपस में मिलके, अलग अलग तरीके के सेल्स मिलके, दे फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, उससे पहले टिश्यूज, एंड देन द बॉडी. इसी तरीके से प्लानिटरी बॉडी, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एक्सेट्रा, दे आर ऑल स्टिल बिगर ऑर्गेनाइजेशंस. We can see it ourselves, we can see it all around us very easily. एक पत्थर है, एक स्टोन है, it is also self organized, it has its own organization. इसी तरीके से एक piece of iron है, it is self organized. We are not organizing it, we are not supplying any kind of organization from outside. एक एनिमल अगर है, एक काऊ है, एक बफलो है, it is again self organized, and these animals are not creating havoc for others around them because they have a definite behavior. Now take the examples of human beings. So when we look at it, we see that we are self-organized at the level of body. So we are not organizing our body. We are not doing anything for the coordination between the heart, kidney, lungs, and the other organs. All these organs are functioning together. Our input is needed only to provide the required nutrition and to assist the body when we fall sick or get injured. But at the level of I, we are not self-organized. And but then being in space, this self-organization is available, and that is why we are in pursuit of happiness. And और इस happiness क्या है? Happiness is essentially being in harmony. और जब भी हम harmony में नहीं होते हैं, we are unhappy. So this prompts us to understand the real meaning of happiness. So बहुत सारे countless examples से हम ये देख सकते हैं कि all the four orders and the units in them are self-organized. No one is organizing them from outside. No one is supplying them as this organization. लेकिन space में we can say that self-organization is available. इसी तरीके से एक और पॉइंट लिखा है, recognition of relationship. So you see that each unit, it recognizes its relationship and it fulfills its relationship with every other unit in space. So जब पानी, सॉइल में पानी डालते हैं तो वो सॉइल फूल जाती है, it soaks up. So we call this as that the water is recognizing its relationship with the soil and it is fulfilling it. So when we look around us, we see this relationship अपने आसपास in all things around us. एयर सॉइल के साथ में अपनी इस रिलेशनशिप को समझता है, सॉइल पानी के साथ में समझती है, वाटर एंड सॉइल विद द ट्रीज एक्सेट्रा, एंड देयर इज रिलेशनशिप वी ऑल अराउंड अस. And this is the meaning of that the term what is written over here, that each unit is recognizing its relationship and fulfilling it. Human beings, as human beings, we have seen कि हमें भी इस relationship का recognition है with the other four orders, and we also want to fulfill it. और इसी को हम कहते हैं living in harmony with all the four orders. So इस चीज को थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देंगे, if we start paying a bit of attention to this, so we'll be able to understand this thing and we'll be better able to fulfill our relationships with the other units in nature. अगर हम स्पेस की लेकिन बात करते हैं, तो स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग, स्पेस इज ट्रांसपेरेंट.
दिस मीन्स कि स्पेस में देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, और क्योंकि स्पेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हेंस all the units which are in space are able to recognize each other and they are able to be related to each other in space, क्योंकि स्पेस ट्रांसपेरेंट है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर हम इसे सम अप करते हैं, तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस, स्पेस एंड यूनिट्स इन स्पेस। अगली चीज हमने समझी है कि these units are in coexistence with space and they are also in coexistence amongst themselves. Also, we can see कि existence is nature submerged in space, or we can understand this harmony. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ईच यूनिट इज एनर्जाइज्ड एंड एक्टिव इन स्पेस, लेकिन स्पेस में एक्टिविटी नहीं है, इट इज क्रिया शून्य। देयर इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस, और स्पेस में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। ईच यूनिट इज recognizing and fulfilling its relationship with other units in space. Space is in continuity, it is all pervading and it is no activity. So we are also units in space, we are human beings, and there is acceptance in us for this self organization. तो इसके बारे में existence को और आगे हम explore करेंगे in the next class. Thank you for now.